I'll just cross check real life. No, I think real life. Assalamualaikum everyone. कैसे हैं आप सब? Hello, Assalamualaikum So how everyone. many viewers we have? Okay, Just nice. 15 viewers. start interacting in the comment section so we know who's watching and who's with us. Yeah, I just want to see how much people are excited for this session. Okay, 17 people, 19. Yeah, let's go. Nice. That's pretty good. Hello, Hamas. How are you? Hello everyone. Nice to see people starting commenting in the chat. Interact with each other as well before we start. Yeah. Hello Hamza. How are you? Hello, Hamza. How are you? Okay, so I think लोग गाना शुरू हो गया. So let's start off the session. Okay. So Assalamualaikum everyone. My name is Fawad Kamal and I'm the manager of PDG Life Pakistan. Apart from that, I've been in graphic designing in the past 6 years. And apart from that, I'm the co-founder of Bolt Marketing. Okay. Hello everyone. My name is Vanya and I'm the co-manager of GG Life Pakistan, and I am by profession I'm an architect, and besides that I have also been freelancing in graphic design since quite a few years now. So in the field of design since a long time now. Yeah, I'm pretty excited for this session. Okay, so many of you are wondering, say, what is design thinking actually? So it's been a long wait that you guys were seeing. Let's Yeah, also it's have you been a long talk wait. That, about what you think design thinking is, and then Fawad will explain to you what it is and how many of you are right. yeah, I just want to see how many people know what actually design thinking is. Come on, I want to see some answers. At least some of you might know what actually design thinking is. A lot of you are here, so must be here for a reason. What are you here to learn? What do you think design thinking is? What it has to offer? Yeah, I mean, at least someone responds. Okay. Okay, I think we can move on to the next slide. Here we have one response set of cognitive strategic and practical processes by which. Yeah, so Shabir is saying it is basically uh, set of cognitive, strategic, and practical process by which design concepts are developed. Thinking in a designer way. Okay, somewhat close to the answer, Hmm. but not exactly what design is. Come up with ideas or give multiple ideas. No, I don't think so. You're somewhere there. But It's a you are very close to part of answering design it. thinking. Yeah. Yeah. Yeah, thinking about how users would perceive and interact with our designs. Yeah. Okay. Great answer. So now I'll explain what basically uh, design thinking is. It's kind of like very simple.
I'm just gonna give you a small walkthrough and then I'll explain in detail. I'm just gonna say, uh, I think slide is taking a little time to load. Okay, so what do you see here? Design is changing. Changing something is design. Okay, that is fine. Then how about this? Design is evolving. अब what do you mean by evolving? अब evolution जो है दो तरह की होती है. अब for example, we have an example of a telephone here. So when in it was 1900s, तो उस टाइम पे जो था टेलीफोन का, it was in this shape. Then it got evolved 1920s में, तो ग्यारह ग्रामोफोन आ गया. उसके बाद 1940s में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक आ गया. देन इफ यू वांट टू सी, देखो टाइम के साथ कितनी ज्यादा एवोल्यूशन आई है इन डिजाइन में. अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अब आईफोन जो है 2010 में आईफोन एक्स आया था. तो आप देखें ना जिस तरह से गैजेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होते हैं. एक तो होता है, देखो दो चीजें होती हैं. एक आप बता देते हैं कि आपने कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप एक गाड़ी बनाने जा रहे हैं, आपने एक टायर ले लिया, दूसरा टायर ले लिया, एंड देन आप उसके बाद जो है उसके ऊपर फिर उसका सरफेस लगाते हैं, देन आप गाड़ी बिल्ड करते हैं. तो वो एवोल्यूशन नहीं है, वो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. आपके पास एंड चेयर जो है, अगर आप स्टार्ट में देखें, एक वो जो स्कूल में हमारे पास चेयर होती है, फ्लैट चेयर होती है. देन जो चेयर्स थी वो टाइम के साथ इवॉल्व होती गई. ठीक है. अब इवॉल्व होते होते वो क्यों इवॉल्व होती थी? इवॉल्व इसलिए होती थी क्योंकि यूजर की नीड्स डिफरेंट होती थी. एंड जब यूजर की नीड्स आपके पास डिफरेंट होती है, यूजर क्या चाहता है? यूजर कंफर्ट चाहता है. अगर यूजर कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर वो वेबसाइट यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन, दरवाजे में एक हैंडल है, सो द यूजर वुड रादर बी कंफ्यूज के दरवाजा पुश करना है, पुल करना है, क्या करना है. एंड इफ यू प्लेस पुल हुक इन देयर, तो उसको पता होगा कि यार या तो दरवाजा पुश होगा या पुल होगा. तो ये एक ह्यूमन साइकी है जो कि टाइम से कंटिन्यू होती आ रही है हमारे पास. कि हम जो पुराने यूजर्स के एक्सपीरियंस है उसी की बेस पे हम प्रोडक्ट्स को इवॉल्व करते हैं. चाहे वो टेबल हो गया, चाहे वो चेयर हो गया, चाहे वो टेलीफोन हो गए, या चाहे वो बाकी चीजें हो गई. अब सो टू डिजाइन थिंकिंग. अब ये टू डिजाइन थिंकिंग जो चीज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, तो नॉर्मली पहले हम क्या करते थे कि हम डिजाइन, हमने कुछ बनाना है, ओके बन गया, ठीक है, आइडियाज आ रहे हैं, जो भी माइंड में आ रहा है हमने बना दिया. लेकिन हाउ अबाउट के आप अपने पास अच्छे खासे नोट्स इकट्ठे करें, रिसर्च करें, आपके पास काफी ज्यादा पॉइंटर्स आ गए, देन आप उसमें से डिफाइन करें, उसको कंबाइन करें कि आप इसमें से एक अच्छा प्रोटोटाइप किस तरह से बना सकते हैं. तो डिजाइन थिंकिंग जो है ना, बेसिकली आप देखिए आइडियाज कभी भी आ सकते हैं. इफ यू आर वॉकिंग समवेयर, इफ यू आर सिटिंग समवेयर इन द ऑफिस, मे बी एट होम, मे बी किसी भी टाइम आपके पास एक आइडिया कोई भी आपके पास क्लिक हो जाता है. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली डिजाइन थिंकिंग है. सो जो मैं बात कर रहा था कि डिजाइन थिंकिंग है क्या, तो डिजाइन थिंकिंग जो है बेसिकली ये एक प्रोसेस है. ठीक है. प्रोसेस किस तरह का है? एक इस तरह का प्रोसेस जिसमें आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन आप उसको बेसिकली उसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. अब उस सोल्यूशन, वो सोल्यूशन देखो, एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सोल्यूशन आपके पास होंगी. आपने कौन सा सोल्यूशन बनाना है? आपने कोशिश करना है कि आप के लिए. और डिजाइन थिंकिंग की जो मेथोडोलॉजी है ना, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होती है हमारे पास. अ, अब डिजाइन थिंकिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई डिजाइन बना रहे हैं. नो, मैंने जिससे जेनरिकली बात की ना, डिजाइन थिंकिंग हर चीज में है. चाहे वो टेबल है, चाहे वो दरवाजा है, चाहे वो कप का क्यों डिजाइन नहीं है, वो आप देखें कि किस तरह से ह्यूमन की साइकी को देख के टाइम के साथ एवोल्यूशन उसमें आई है. तो दैट इज व्हाट एक्चुअली डिजाइन थिंकिंग इज. Okay, so one point I have to add to that is there's also a question in the comments. Okay, sometimes the evolution that we have in design is not just because there is a need for a change, right? A big reason for why iPhone is developing and we have newer and newer versions of it coming out.
Number one is technology. With technological advancements, it's easier to solve problems that people have. So essentially, आपके पास initially we used to have landlines. Now you don't see anyone using a landline. Why? Because everything can be done from a phone, right? Similarly, there were some things that you couldn't do perhaps with the first iPhone that was released, but with the latest iPhones you can do those things. So that is the first reason. And then alongside that, again, Apple has its business. They want their business to flourish and develop. So every year they're going to launch a new iPhone. Reason is because the way they make their mobiles is so that they're obsolete. If they're obsolete, then people would want to buy an iPhone in the future with like newer technology. So WhatsApp doesn't run on the earlier iPhones anymore, and simply because उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ गई हैं. So another one of the main reasons for that is essentially that they want their business to grow as well. Someone can still be using the first iPhone, but again they've made it in such a way कि उसमें आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, now you cannot use WhatsApp anymore, so you have to get the newer iPhone. So evolution doesn't just come from the need of the hour of the people. Not everyone needs latest technologies as well. It has multiple other aspects that play a role in it, but the need of people and basically the change in design, like a lot of it is impacted by what people want, and because you want to solve more and more problems with one product as compared to using multiple different products. So that's an explanation for the phone. Yeah, I think a very great answer. इसमें एक और चीज अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो that would be design thinking. Simple words में it is a problem solving method. Okay, it is design methodology. It may be a creative process. It may be a business strategy. So it can be a lot of things. Okay, then I think so. Yeah. Okay, so what design thinking is? It's basically it's a process. Okay, you use the process to develop a concept, but the main thing that you need to remember always is कि what design is for the people. You are never going to be able to come up with design and create a design unless you design it for the people, right? So here, like I'll give you an example. Basically, user experience, what that does is what where user experience is literally in every different aspects of your life, and you're going to realize that once you focus on a lot of different things. So I'll give you an example. Like I'm an architect, so I see a lot of things from that perspective. Have you ever noticed that you'll have an area where you have a lot of footpaths being constructed? It's a pedestrianized area like a shopping center or something. But you'll always find informal pathways being formed where the grass isn't grown and people are using that as a shortcut. Again, what that is it's user experience, right? It's how a person behaves to a certain surrounding. They want to take a shortcut. Maybe there are trees in that green area which are protecting you from the sun or any other reason. So that is something you need to incorporate in your design, because if you don't design that, then like essentially there's no reason, no need for the footpaths if people are going to use alternative paths, right? So that is like one thing. Design is for the people. If you don't design keeping the people in mind, people are not going to use your design the way you designed it, essentially. Similarly, web designing may you can also imply the same ideas, right? So when a person goes on a website, they're initially unka jisna se mind is working, they're gonna move to a certain part of the website to access a certain area, right? If you want to go to the homepage, you're gonna access a certain part. You know, okay, if I click on the logo of the company, that's gonna take me to the homepage. So that's how you go about designing it. So again, that's a behavior that how a human reacts, and so you need to incorporate that in the design. Again, user experience and incorporating people. So people are like the most essential part of your design or developing any concept, so you need to keep that in mind. Moving on, we can move on to the next slide. I think there's a bit of a lag. Okay, so the process. This is the process which is generally followed for your design thinking process, as you call it. So it has 5 different steps. We'll explain each step one by one, but I'll just go through the steps right now. So the first step is to empathize. Step number 2 is define. Step 3 is ideate. Then you prototype, and lastly you test it out. So moving on to the first point, which is to empathize. Okay, so here the concept of like
empathy and sympathy comes in, right? I'm pretty sure you all know, okay, sympathy or empathy में क्या difference होता है. To sympathize with someone, you understand their problem. To empathize, you emotionally connect with them and you experience what they've gone through, right? So you need to truly empathize with someone to be able to design for them. Otherwise, you'll never be able to design for their problem, you can say. And design, as you know, is essentially problem solving. So, sometimes when you're using a product and you get like extremely frustrated using it because it's not working the way it should be. So, at that point, you're truly understanding the problem like any other user is experiencing, right? So, us time pe you'll be able to come up with a better solution because you know के problem क्या है and how like it emotionally is affecting you. So moving on. Okay. So when you're considering your user, you also need to consider the fact that your product isn't essentially for one user, right? It can come with a larger audience. So you need to be socially inclusive. You need to make sure that the design that you are creating is catering to everyone. So like these are just some examples. Um, how someone is going to react to your design doesn't mean another person will react to it in a similar way. Jab we're designing buildings, we have to keep in mind every building has a ramp that takes you inside. Not everyone can walk. People are disabled. People use wheelchairs. So all those aspects they play a major role in designing. So you're limiting your audience if you're not being socially inclusive. If we can move on to the next slide, there is an example, and I need you guys involved in this. So there are two images, right? They're both images of elevator buttons. Now I want you to tell me the difference between them. If you can pick up on it, it'll be great. Otherwise, I'll explain what it is. So let's see some comments and see if you can tell me कि इन दोनों में क्या फर्क है, like what's the difference between them. What do you think is like the main design difference you can say? Yeah, I just want to see how many people know that basically what is this image So let's see some. representing? The left side and the right side. Okay, so we already have the answer. Okay, I'm really glad to see a lot of you know this. Um, yes. Yes, as Abdul Wahab said, Braille, it is catering to visually impaired people. So I have seen many people that don't actually know what Braille is or don't incorporate such things in design. Most of the buildings in Pakistan do not cater to this, right? So visually impaired people and blind people, they cannot see, of course. So for them, Braille is like a written language. You see those dots under numbers for those people who don't know. That is called Braille. It's like a form of a language for these people to understand the number so they can touch it with their hands and feel what number it is and then press the button accordingly. So Braille is something that should be incorporated in within every elevator, not just elevator, but multiple like other public spaces should incorporate Braille. And exactly like I'm reading many comments, and I am quite glad to see that so many of you know about this because a lot of people actually do not even know what Braille is. So this is just one example of where you have to be socially inclusive and include people who are disabled within your design. And so this is more of a generic example, right? Yes, exactly like ATM machines. This is more of a generic example that's used in public spaces, but your design might not be catering to a disabled person, right? So you need to see what your audience is, and then accordingly write what difficulties they might face or like what problems they might have, and then accordingly make sure your design is being socially inclusive as well. Fawad, can we move on? So yeah, like I said, you need to see what your audience is. You need to, before you start designing, write down all the challenges that they might be facing. Because when you're designing, उस time पे you that might not come to you. Okay, I'm not getting this, I'm not getting that. So you want to make your life easier by like noting all the problems that you think people might be facing down first, and then essentially when you're designing, you'll be catering to all those problems or anything that another person might face difficulties. Like you need to put yourself in the user's shoes and at this point and see, okay,
everyone's shoes, or like for your entire audience, not just to like a specific general audience. You need to, other you have people who are elder or who are kids who would be using your product, so you need to see from the point of view of all those different people. So yeah, just write down all the problems initially, and then you can take those forward while you're designing. Okay, just answering one question. Although we're going to cater to all the questions later, but yeah, I understand we don't have ramps outside all the public buildings, so that is a problem, right? And that's something that we're catering to now as architects, but not everyone caters to it. That's again a difference between an architect and then a contractor. Things are done very differently. Okay, so Fawad, you can continue. Yeah, I would like to add few points. इसमें so design thinking में even it comes with the balance of thinking. देखिए, you have three things. You have analytical thinking, then you have design thinking, and then you have intuitive thinking. अब analytical thinking में क्या होता है? You are 100% reliable on that. Design thinking में it's a mix of 50-50. And then intuitive thinking, it's a 100% validity. अब intuitive thinking क्या है? ये इस टाइप की thinking है जिसमें आप बेसिकली एक्चुअली यूजर्स के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं एंड आप एक्चुअल अपने यूजर को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका यूजर है क्या। जिस तरह गांधी ने बात की ना, एम्पैथी, आपने अपना जो है, अब जो हम जिस तरह डिफाइन की तरफ आ गए, तो डिफाइन में आपने अपना क्लियरली गोल डिफाइन करना है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। लॉट ऑफ यू आर लाइक प्रीटी स्टक के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो हम लोग वी आर स्टक विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि प्रॉब्लम क्या होगा, यूजर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो व्हाट्स द बेटर वे टू आइडेंटिफाई द यूजर प्रॉब्लम एंड व्हाई डू वी नीड इट। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें आपने सबसे पहले जो चीज आइडेंटिफाई करनी है, दैट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूजर कि उस यूजर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्मॉल, अब देखिए टारगेट ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए। टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी चीज के लिए बना रहे हैं, आपको अपने टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। अगर आपको अपने टारगेट ऑडियंस का नहीं पता एंड आप उसमें जो है, आप अपने यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता पा रहे, आप अपने यूजर की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे एंड आप उसके इनसाइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो देन आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ ही नहीं रहे। सो जस्ट मूविंग ऑन टू एन एग्जांपल, आई एक्सप्लेन कि इसमें है क्या बेसिकली। So as you can see, this is like a pretty clear example. Sam is a busy manager who needs a way to integrate healthy eating habits because he doesn't want to feel like he's on diet. अब इसमें क्या है, ये हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है एंड हमारे पास यूजर कौन है इस टाइम पे? हमारे पास यूजर जो है वो सैम है एंड हु इज ही इज अ बिजी मैनेजर। ठीक है। अब उसमें क्या है, इसमें ये है कि उसने अपने एक हेल्दी ईटिंग हैबिट को बिल्ड करना है। उसकी नीड क्या है? आप देखें यहाँ पे नीड आपको पता चल रही है ना। आप यूजर की नीड क्या है कि वो एक ईटिंग जो अपनी हैबिट है उसको हेल्दी करना चाहता है एंड वो अल्टीमेटली ये भी फील नहीं करना चाहता कि वो डाइट पे है। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं कि जिसमें बेसिकली हम इंटीग्रेट करेंगे कि सैम जो है उसको फील भी ना हो कि बेसिकली वो डाइट पे है एंड उसकी जो ईटिंग हैबिट है वो भी ठीक हो जाए। अब इसमें मैं आपके साथ एक थोड़ी सी एग्जांपल शेयर करने लगा हूँ जिस कैमरा। ओके, सो इसमें ये है कि मैं हमेशा आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप बॉटम अप से ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बिल्ड करें। ठीक है। जितने ज्यादा इंसाइट्स आपके पास होंगे, जितने इमोशंस होंगे आपके पास, द बेटर आर द चांसेस कि आप उसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। एंड देन इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ, अगर आप ये करें कि सैम नीड्स टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन, पहले उसने पहले अपना न्यूट्रिशन देखना है कि उसका बेटर एक्सपीरियंस किस तरह है लंच में फॉर एग्जाम्पल। देन उसको ये अंडरस्टैंड करना है कि यार उसका डाइट फेल क्यों हो रहा है एंड देन उसके बाद उसने ये देखना है कि उसके इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है। वो फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा है उस टाइम पे। एंड ऑब्वियसली यू गाइस टेल मी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई यम्मी फूड है, ठीक है, एंड समवन इज एडिक्टेड टू दैट फूड, सो इट इज rather difficult for that user to cater कि वो उस फूड को जो है क्विट करे इमीडिएटली। अब वी नीड वी नो दैट कि हमें बेसिकली क्या करना है। हमें अब बेसिकली सैम की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये ट्राई करें कि सैम हमारे पास एक बिजी मैनेजर है
जिसने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है हेल्दी ईटिंग हैबिट को। एंड वो चाहता है कि मैं बेसिकली डाइट पे भी ना रहूं, मुझे ऐसा फील ना हो। अब उसमें आपका ये होता है कि आपके पास इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह वो सारी चीजें भी आ जाती है। एंड देन इफ यू सी, आपके पास यहाँ पे एक और चीज है, दैट इज के सिंथेसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब सिंथेसाइज करना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, सिंथेसाइज का मतलब क्या है, या आप सारा कुछ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास जितनी सारी डेटा आपने इकट्ठा किया वो सारा जो है आप कंबाइन कर लें। एंड देन उसके बाद जो है आप अपना जो गोल है उसको क्लियरली डिफाइन करें। अब देखिए, जिस तरह हमने पिछला स्टेटमेंट पढ़ा, अगर मैं पिछली साइड पे वापस जाऊंगा ना तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, यूजर नेम इज अ यूजर कैरेक्टरिस्टिक, यूजर नीड बिकॉज इनसाइड। अब हमारे पास, अगर हम पिछली साइड पे वापस जाए ना तो हम उसको किस तरह कैटर करें। सी, सैम क्या था, हमारे पास यूजर नेम था। बिजी मैनेजर क्या है, बिजी मैनेजर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। एंड देन यूजर नीड क्या है, उसकी नीड ये है कि ही वांट्स अ वे टू इंटीग्रेट हेल्दी ईटिंग हैबिट। एंड देन जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वो उसका इनसाइट है। सो दैट्स हाउ एक्चुअली यू कैटर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। के प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। अब think of a problem right from here, मतलब अब हम आप जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस एग्जांपल, आप अपने माइंड में कोई और एग्जांपल सोचे, कोई और यूजर सोचे। फॉर एग्जांपल उस पर ये मसला आ रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी जो नीड है वो क्या है, एंड उसके अलावा जो उसका इंसाइट है वो क्या है। या गानिया, इट्स व्हाट डू आई डू। Sorry, my mic was on mute. So the next step is to ideate, right? Ideation comes with no limits. Now this is something that I solely learned in design school. Okay, you can't limit yourself when you come to ideation. So you have there's no right or wrong. Literally, you have, if you want to think of something that's outside of the box, so you start by just brainstorming, and when you brainstorm you can come up with anything that you think might be related to your idea, or that might help your idea, something that inspires you to solve the problem in one way. So normally when you go about designing something, you should really look at case studies and see what already exists and what it doesn't exist, so how the problem is being catered to. And looking at case studies is a great way to ideate as well, because they sort of give you that starting point, so you can use case studies and bring together multiple case studies as well when you're designing. So like ideation, there are no limits, and you want to make sure that anything that inspires you, any ideas you have, you sort of bring them together. Fawad, can you move on to the next slide? So ideation mein there are many ways how you can ideate, right? You can write things down on a piece of paper and then start bringing them together. The best way to ideate, especially in design, is to sketch things out, whether you're creating a product or you're designing something. It's like the best for me, the best way to go about something is to sketch out multiple different ideas and then see how I can bring them together. I know that sketching isn't really like everyone's cup of ideas. So like what if Awad, you can move to the next slide, then another way you can ideate is basically crazy eights, right? This is like a form of ideating. So you make a table with like 2 by 4 ka table, or like any other way, it's fine as well. This is just like one idea that a lot of people use. So you can write down all the ideas that come to your mind, and you don't have to worry about feasibility at this point, as it's mentioned. So why you don't have to worry about feasibility is because that is something that sort of comes up in the next stage. Right now you want to really put everything out there so you can then filter things out in the future, like as you take the design further. So at this point of designing, you really don't have to worry about if something is going to work, if something is like falling in our budget or not, and all any other aspects. So you like sometimes you also have limitation in terms of what is available. If you're creating a product, so you want to procure your material or whatever from local vendors. So these are all things that do affect your design, but if you start letting them influence you at the ideation stage, then that really limits your design and what your outcome is. So again, ideation made there are no limits. You just want to do whatever you want
make sure that everything is out there and put down on a piece of paper before you take it further. Again, similarly on the slide, you can read it's mentioning the same thing that you really need to just put everything down first and sort of have no limitations at this point, and then you can develop that design further. So ideation is a very important step. You want to make sure that you're researching and looking at other designs that have been developed, maybe things that aren't a possible solution but are something that inspires you and something you can bring within your design. Those things can also help you. So just ideation may just, yeah, again, like just put everything out there. Yeah, I'll just quote a small example here. It's not, I'll just add an example of if you know Airbnb. ठीक है, Airbnb के founder कौन है? जो केबिया. So when Airbnb was launched, तो उसमें क्या था? उसमें उन्होंने ऐप तो बना ली थी. और ऐप जब बना ली थी तो ऐप डाउनलोड हर बंदा कर रहा था, लेकिन ऐप यूज कोई नहीं कर रहा था. तो दे वर वेरी कंसर्न कि यार हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है. ऐप तो हमारे पास है, हमने तो अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन लोग ऐप यूज नहीं कर रहे. सो उनकी जो मार्केटिंग टीम थी, सो दे सेट डाउन के लेट्स डू डायरेक्ट मार्केटिंग. मार्केटिंग क्या करते हैं कि न्यूयॉर्क, शिकागो, इन जगहों पे हर जगह पे बैनर्स लगा दो एंड भर दो एडवर्टाइजमेंट से. इवन देन स्टिल उसके बाद भी जो है उनकी जो प्रॉब्लम थी ना, वो सॉल्व नहीं हो सकी. एक्चुअली वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे उस टाइम पे. देन देयर वाज वन पर्सन ऑफ देम के उसने उनसे कहा कि आप जो है बेसिकली क्या करें, आप यूजर से जाके पूछें कि उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है. वो हमारी ऐप डाउनलोड तो कर रहे हैं लेकिन यूज क्यों नहीं कर रहे. सो वन ऑफ देम वेंट टू देम एंड दे सेड कि आप हमारी ऐप क्यों यूज करें. तो यूजर ने बड़ा अच्छा कहा कि आपकी ऐप में जो पिक्चर्स है ना, वो हमें इनसिक्योर फील करा रही है. मतलब व्हाट इज एयरबीएनबी? इट्स बेसिकली कोई भी बंदा अपने घर का एक पोर्शन जो है रेंट रेंट आउट कर देता है. ठीक है. तो उसमें उसने क्या कहा कि हमारे पास जो है लोग तो घर दे रहे हैं लेकिन जो पिक्चर्स हैं वो ठीक नहीं है. अब उन्होंने जब इस चीज पे फोकस किया ना, एंड दे वेंट आउट एंड उन्होंने अच्छी खासी पिक्चर्स ली एंड बहुत ज्यादा एलीट किस्म की पिक्चर्स रूम्स की कि ये रूम्स हमारे पास अवेलेबल है. एंड ट्रस्ट मी, उनके जो सेल्स है ना, वो 2% से 24% तक चले गए. वो क्यों थे? क्योंकि देखो, यूजर की ये नीड ये नहीं थी कि वो ऐप से चीजें नहीं कर रहा. उसको प्रॉब्लम ये नहीं हुई थी. उसको प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो इनसिक्योर फील नहीं कर रहा था. तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी कोई तस्वीर उठा के डाल दी है एंड दे वर लाइक यार शुड वी स्टे हियर और नॉट. तो एक्चुअल प्रॉब्लम नीड को उन्होंने वहां पे बेसिकली आइडेंटिफाई किया. देन वी हैव प्रोटोटाइप. ठीक है. प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप सिंपल वर्ड में आपके पास कोई भी ऐसा टेस्टिंग प्रोडक्ट जिससे आप जो है बेसिकली किसी को अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं. अब आपने सारा कुछ कर लिया ना, एम्पैथी कर ली आपने, आपने जो है डिफाइन कर लिया, देन आपने आइडिएट भी कर दिया. अगला स्टेप आपका प्रोटोटाइप होता है. अब प्रोटोटाइप में आपका बड़ा क्लियर गोल होता है कि आपके माइंड में जो भी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आ रहा है, आप फॉर एग्जाम्पल डिजाइन करें तो आप वायर फ्रेम्स बना दें. वायर फ्रेम्स के बाद फिर आप उसको बेसिकली डिजाइन में कन्वर्ट कर दें. तो ये वो वाला स्टेप होता है जब आप बेसिकली अपने यूजर से अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं. सॉरी. अब प्रोटोटाइप्स जो है वो इनएक्सपेंसिव होते हैं. प्रोटोटाइप की आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती. ये स्केल डाउन वर्जन होता है, छोटा सा वर्जन होता है. एंड प्रोटोटाइप्स या तो इधर एक्सेप्ट हो जाता है, या तो वो इम्प्रूव किया जा सकता है, या उसको रिएक्जामिन करते हैं, या मे बी वो रिजेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन द यूजर एक्सपीरियंस के यूजर एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट पे कैसा रहा है. अब ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज है. प्रोटोटाइप वो वाला स्टेज है जहाँ पे आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. आपने अभी अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च नहीं किया. नॉर्मली जब आप देखते हैं ना, लोग अपने प्रोडक्ट्स प्ले स्टोर वगैरह पे अपलोड करते हैं, तो नॉर्मली क्या करते हैं? बीटा टेस्टिंग करते हैं. एक बेसिकली वो अपना यूजर का फीडबैक ले लेते हैं, प्रोडक्ट को साथ साथ इम्प्रूव कर देते हैं. तो अब इफ वी गो फर्दर, तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाली. ठीक है. ये स्टार्ट मैंने बात की थी कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट है क्या. अब देखिए, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर ले लूँ, आपने यहाँ से ये पोर्शन ले लिया,
ठीक है। एंड देन आपने दो टायर बना दिए, पहले एक टायर है, दो टायर, फिर आपने सरफेस बना दी गाड़ी के, फिर आपने उसकी छत बना दी, एंड देन उसके बाद आपने जो है बेसिकली स्टीयरिंग ऐड कर दिया। दिस इज नॉट अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये तो सिर्फ आप एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा प्रोडक्ट। जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था ना, डिजाइन इज चेंजिंग, डिजाइन इज इवॉल्विंग टू डिजाइन थिंकिंग। स्केटबोर्ड थी पहले, थोड़ी सी स्कूटी बन गई टाइप की, ठीक है। देन इट कन्वर्टेड टू अ बाईसाइकिल, देन मोटरसाइकिल, एंड देन उसके बाद अल्टीमेटली कार, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली एक्चुअल मिनिमम प्रोडक्ट आपका, ये होता है जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है। अब अगर आप देखें ना, एंड्रॉइड के न्यू फोन आते हैं या आपके आईफोन्स न्यू आते हैं, तो सिमिलरली उसमें कोई नॉर्मली इतना ज्यादा चेंज नहीं होता आजकल जो आता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें पुराने आपके आईफोन वर्जन से, तो उसमें काफी ज्यादा चेंज है, ठीक है। अब अगर आपके पास अच्छा खासा डेटा आ गया, आप जाहिर बात है, आप 3 स्टेप्स कर लें तो उसके बाद आपके पास अच्छा खासा डेटा गैदर हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। उसमें आप एक तो वायरफ्रेम्स बना दें, फिर आप अपने डिजाइन बना दें, ठीक है। एंड उसके बाद जो है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोटोटाइप्स की, तो प्रोटोटाइप्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनएक्सपेंसिव, प्रोटोटाइप हर यूजर टेस्ट कर सकता है। लेकिन देखिए, आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने यूजर के पास, एंड देन यू हैव टू से दिस इज द प्रोडक्ट आई हैव मेड। मैंने ये प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई की थी कि यूजर को ये नहीं आ रही है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एम्पेटाइज किया, डिफाइन किया, देन मैंने उसको आइडिएट किया। देन जब मैं प्रोटोटाइपिंग पे आया, तो अब प्रोटोटाइपिंग से आप वापस बैक स्टेज पे जा सकते हैं, क्योंकि जब देखें आप दोबारा से या तो री इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, या तो उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे, एंड या तो जो है वो आइडिया बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगा। देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अनदर आइडिया। सो प्रोटोटाइप इज आपका जो एंड गोल है ना, वो आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इट्स वन ऑफ द स्टेप्स जो कि आपके पास होना चाहिए बिफोर द रिलीज ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप डिजाइन थिंकिंग के जो प्रोसेस है उसको मस्ट फॉलो करें इसमें। मे बी ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई यूजर के आपके पास आ जाए कि ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोटोटाइप बनाया, इसमें ये वाला ग्लिच आ रहा है, या ये इशू हमें फेस करने को पड़ रहा है, या फॉर एग्जाम्पल ये बटन बहुत ज्यादा बड़ा है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि उसमें होंगी, ठीक है। Yeah, and like I आप mentioned, आपने क्या, sorry, continue. या I'll go at the end. You can finish saying what you're saying. ओके, आपने क्या करना है, आपने एक फिजिकल आइडिया जो है, कोई भी आपके माइंड में आ रहा है, आप उसके सोल्यूशन पे फोकस करें। जब अभी हमने 3 स्टेप्स आपको करवाया ना, वो स्टेप क्या था, प्रोटोटाइप था, तो उस पर कोशिश करें कि एक प्रोटोटाइप बनाएं। एंड देन उसके बाद आप उसमें क्या करें, आप देखें आपको उसमें क्या क्या चाहिए होगा, उसमें टेक्नोलॉजी आपको चाहिए होगी, उसमें आपको थोड़ा बहुत आपके अमाउंट स्पेंड होगा, उसमें आपको रिसोर्सेज भी लगेंगे, उसमें इवन आपके लिंक्स वगैरह जो है वो सारी चीजें भी होंगी। Yeah, so as I mentioned in the last step, like the ideation step, okay, how you need to sort of not have any filters at that point and just put everything out there. So prototype is where you take जो आपके उसमें से feasible ideas है ना, you take those further, and feasibility then you measure out through what resources are going to get used, how much time that requires, all the mentioned points. So this is now the point where you start applying those filters. So prototyping helps you in a lot of ways because it helps you see closer to what the final results are going to be like. You see what materials will be used, how you're going to create it on a mass scale. So bringing your designs to actual life, that step in between is basically prototyping. So moving on, which is our last step, and that is testing your product. Fawad, if you can move on. Yes, okay. So this step is essentially one of the most important steps because you really want to make sure that the product you have created works, and not only works, you also want to ensure that आपके solution is not causing newer problems, right? So I'll give an example here, which will help you understand what I'm saying. So there's a book called Design of Everyday Things by Don Norman. I don't know how many of you know of it or have read it.
So in the start of the book, he mentions this example that where one of his friends basically enters a building, and the building ki jo entrance hai na is designed in such a way that it has a set of two doors. So there is like six doors, push either side, six doors, and then like a transition space, and then another set of six doors. So it's like two doors, and with a transition space in between before you actually enter the building. So this is basically essentially a solution to creating a vacuum before you enter the building, and it helps to reduce heat transfer आपकी building के अंदर. ठीक है, it's a very common design strategy that's followed. So now he came up with this design solution to the problem to minimize आपके heating and cooling loads, right? He created this design जहाँ पे vacuum हो जाता है, so there is like less transfer. The doors are pushed on either side, so it doesn't create that issue of like people knowing whether you have to pull the door or push the door, as Fawad mentioned in the start. Right now, the problem here is like in what he mentions in the book is okay, so his friend enters this set of like the first doors, right, and he goes to into the transition space. Now he has a change of mind and he decides to go back out of the building. So the same doors that he came in from, now when he's trying to go out and he pushes on the door does not open. So he gets a little confused. He tries a few times, the door does not open again. So he turns around to go back into the building, and now when he's going back into the building again, he's pushing on the doors and the doors are not opening. So he's like stuck in this transition space in between. अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं इन्हीं दरवाजों से पहले अंदर आया था और इन्हीं से मैंने लोग आगे जा रहे हैं, तो मैं कैसे बीच में फंस गया हूँ, राइट नाउ what the problem here was. So the architect, he designed this like beautiful set of aesthetically pleasing doors. उसने उस doors को जो है ना उनकी सारी like framing वगैरह बहुत beautifully design की, ताकि because there's so many doors it doesn't create an ugly design language, or like it's aesthetically pleasing for people. But the problem here was now आपको जो door का design होता है, it's in such a way if you have a push door, so the push door generally comes with a plate, so you know कि इस side पे मैंने push करना है. So the door is hinged on one side, and on the other side is the side that you push or pull from, right? Because he had hidden the utility aspect of it, so the hinges of the door weren't present. Now the guy was essentially pushing on the side of the hinges, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, because you have to push on the other side. You cannot push on the side of the hinges, otherwise the door won't open. But because that utility aspect of the design was hidden to cater to aesthetics, he created a completely new problem, right? So that is where testing was lacking. So you need to ensure that testing when basically now you're like testing out human behavior, right, how someone responds to your design. So if your design is essentially catering to newer problems, then it's not successful. So I hope that's like a small example, but I hope that helps you understand how important testing is. Then moving on, how can you use design thinking today? Fawad will explain this. Yeah, so this is one of the examples which मैंने यहाँ पे mention किया है. How can you use design thinking today? So design thinking, it's not just about again just building the product and product आपने launch कर दिया. It's about how even you market it. So there was a company Sunrise Coffee. ठीक है, they started their business selling the coffees, and उन्होंने क्या किया सबसे पहले उन्होंने अपने डिजिटल प्रेजेंस इंश्योर की कि हम लोग अपने डिजिटल प्रेजेंस इंश्योर करें. So if someone wants to know our brand, so they can know from हमारा कि हमारा brand क्या करता है. So brand awareness is very very important. Then the second point is कि social media and the advertising strategy थी वो उन्होंने follow की कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर देते हैं, एंड जस्ट पीपल वांट टू सी के हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ कॉफीज मिलती हैं. एंड देन उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली उनकी कॉफी सेल्स आना स्टार्ट हो गई. एंड जो लास्ट में एक पॉइंट था कि उन्होंने कॉफी डोनेशन का जो है एक काइंड ऑफ ऑप्शन रखा कि उससे भी हमारे देखा ये स्ट्रैटेजीज होती है ना मार्केटिंग. आप लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, आप अपने कस्टमर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं. अब आप खुद बताएं कि कितने लोग कॉफी पीते हैं, नॉट इन पाकिस्तान बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो अब जाहिर बात है दे वर लाइक सेलिंग द कॉफीज ऑनलाइन एज वेल, डिलीवरीज वगैरह करना. तो दे वर कि यार हमने सिर्फ ये नहीं करना कि स्टोर पे कोई आया उसको पता लगे कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है सनराइज कॉफी का. नो, इफ सम अब स्टारबक्स आसान एग्जांपल है, हर बंदे को पता है स्टारबक्स जो है क्या वो कॉफी प्रोवाइड करता है.
ठीक है, तो वो ब्रांड अवेयरनेस किस तरह आई है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई है कि उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी डिजिटल प्रेजेंस इंश्योर की कि लोगों के माइंड में बैठ गया कि अल्टीमेटली दिस इज द ब्रांड विच इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट। अब आसान एग्जांपल और है, आप कोक की एग्जांपल ले लें, टैक्सी की एग्जांपल ले लें, आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में हमेशा आता है कि एक कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों इस तरह का है? क्योंकि उन्होंने अपनी अवेयरनेस इतनी ज्यादा क्रिएट कर दी, इतने ज्यादा वो ब्रांड जो है लोगों के माइंड में बैठ गया कि अब लोगों को पता है कि बेसिकली कोका कोला हो गया या पेप्सी हो गया, तो ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एवरीवन नोज। तो यस, आई थिंक दीज आर थिंग्स जो कि बड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 4 पॉइंट खासकर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिजिटल प्रेजेंस में। तो या आई थिंक इसमें आई जस्ट ऐड अप दो और पॉइंट्स। वो ये था कि देयर आर सम बुक्स जो कि आप रीड कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज चेंज बाय डिजाइन, एंड दिस इज जस्ट एन अमेजिंग बुक। प्लीज, अगर किसी का बुक रीडिंग का शौक है ना, डिजाइन थिंकिंग की स्किल्स इंप्रूव करनी है, मस्ट रीड दैट। इसके अलावा फील लाइक एन आर्टिस्ट और शो यू वर्क द बैक ऑफ द नैपकिन, द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, दीज आर जस्ट अमेजिंग बुक्स। अगर आप अपने स्टार्टअप को एनहांस करना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड बुक। स्प्रिंट डिजाइन इज अ वेरी गुड बुक। Game thinking. So all of these books are related to design thinking, and ये very good start in design thinking, आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड these are some of the resources जो कि आप यूज कर सकते हैं। गूगल मटेरियल डिजाइन है, डॉक्टर नॉर्मन की एक बुक, दो बुक्स हैं, आई थिंक एक ही बुक है, इट्स रिटन टू टाइम्स, एंड But प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। okay, so या there are या multiple resources online, right? Design of everyday things. Actually, there are like I think there was an earlier version of it, and then a newer version of it got released as well. So there are multiple different resources online. Design thinking essentially is just a process, right, of how you develop a concept. But like if you need help with designing, there's so much available online that can help you. So Google Material Design is like available online. It's a great way to understand how to start designing. You understand different elements and how to take them further. If you look up principles and elements of design, these are some very basic things, but this is something that we were taught in the start of our architectural school. And in like the first year, we were essentially just taught how to design and how to see and understand the design. So our work was actually not related to architecture at all. So principles of design and elements of design. Elements is essentially things like a dot, a line, and all those other elements that like color and texture things that you incorporate in a design. So studying the elements and incorporating them with the principles of design, which is basically rhythm and like negative and positive space, all these things. When you put them together, it's how you come up with a great design, right? So I'm talking more in terms of like graphic designing, maybe right now. Um, but these are essentially like the key principles that come at the start of a design. So if you understand how those things works, then you can become a great designer. But you need to sort of like take some time, read up on a lot of things, practice. I think that's essentially the start. They're the books like we mentioned before, they're great. If you want to take a screenshot, I think we can go back to the slide, you can take a screenshot of it. Like I mentioned the example of design of everyday things, so these are also limited. These talk about a lot of things that exist right now, products that exist, the problems that they come with, how they can be improved, how you can think better as a designer. So I think read up initially if you want to start your design career, and really study other people's designs, and don't just get inspired by them, but also critique them, because that's a great way to start. Because once you start seeing problems in designs, only then can you like improve them and make them better. Apart from that, if you guys have any questions, you can drop them in the comments section and we'll try our best to answer them. Yeah, and I just would like to add few points in here कि देखें, प्लीज कंसिडर डिजाइन टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर वर्क। हमेशा अपने रिसर्च को टॉप पे रखें, क्योंकि व्हेन यू डायरेक्टली सेट ऑन द सॉफ्टवेयर एंड स्टार्ट वर्किंग, सो दैट्स नॉट गोना हेल्प यू आउट मच। चलो एक दफा काम हो गया, दूसरी दफा हो गया, लेकिन लॉन्गर गोल में इट्स नॉट गोना हेल्प यू। तो प्लीज मेक श्योर कि आप डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करें। एंड जिस तरह जानिया ने बात की ना, ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स भी इवन है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, लाइन क्या है, शेप क्या है,
देन आपके पास जो है बेसिकली टाइपोग्राफी क्या है, आपका जो कलर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीजें हैं। टेक्सचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइट स्पेस क्या है, नेगेटिव स्पेस क्या है, डेप्थ क्या है डिजाइन में, प्रॉक्सिमिटी क्या है, एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिजाइन क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके डिजाइन कैरियर का। सो और ध्यान का पोर्टफोलियो डाला, someone wants to see my work, तो ध्यान का पोर्टफोलियो यहाँ पे है। दिस इज द गानिया वन, और यहाँ पे लिंक्डइन है गानिया का, ठीक है। So if someone wants help in design career, so feel free to reach us out on Facebook, LinkedIn, and we'll always there for the help. And yeah, if you have any questions now, so you can ask. I hope that Otherwise, this, so yeah, we can. yeah, I hope that it helped you in some way or the other, or answered some questions. If you have any questions, yeah, again, drop them in the chat. Yeah, just feel free to share the questions, and we will try our best to answer them. Okay, I'm just going through the old things. Maybe someone had answered them. Yeah, I think you can find up more, but these are some of the best resources that you can utilize and go through the design thinking process. Yeah, exactly, Sadia. Problem statement makes clear that what needs to be done. So, and what is basically out of the scope. So, yeah, I think nobody has a question. We have like 18 people in live, but अगर किसी का कोई सवाल है तो yeah, you can really ask. You can answer them. You can also always reach out to us on LinkedIn. If you ever have any queries regarding anything, you can just drop a Yeah. message. And yeah, And उसके yeah, अलावा भी someone asked me इसकी recording available होगी, so live sessions are recorded, so you can like come back to this page, and जो live session होगा उसकी recording already वहाँ पे मौजूद होगी. So yeah, thank you so much guys for joining in. Thank you so much Daniel for the time and explaining things. So I hope it was helpful in one way or other way. But yeah, if we can help you in any way, you can reach out to us on LinkedIn. thank you for attending. Yeah, thank you. Thank you. Allah Hafiz. Happens.